to welcome Alwaez. We don't have any fixed topic for the seminar, but we would like it to be as informal as possible, and let's try to have as lively a discussion as possible. And with that, I would like Alwaez to start. Now we must start with the Ginan. भली करावो शाह मदद मोमिनो अॼु ॾांहुं सेमिनार जहिड़ी आहे जो कि मेन रीज़न बनाइण जो तो यंगस्टर जे साथे मिलण जो हो, पण यंगस्टर्स ओछा आहिनि अने नॉन यंगस्टर्स टीजा आहिनि। हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमायूं मुझो मोमन कोई डी बुढ़ो नथो थिए। मजहब अड़ी चीज है दीनदारो कि इंसान के मजहब विषय इल्म रखियो खपे, जानियो खपे। असी शाह जो दीदार कुल गिनो था, कुल नियाज वक्ते असी फरमान पीर शाह बोलूं था, कुल असी जमीन मथे हाथ रखी नेतरे वक्त अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलमो पढ़ूं था। दुआ जे अंदर कुलाई असी राइट शोल्डर ने लेफ्ट शोल्डर के टच करूं था। ही मड़े चीजों दरेक इस्माइली के जाननी खपे। पर इस्माइली मजहब जे अंदर इल्म जो जेटलो दर्जो रखण में आयो है, असी एतरी दरकार नथा करूं अने इन जे लाए घणी वक्त पंहिंजे मन जे अंदर फरमानो अने मजहब जी बाबतों में शंका उत्पन्न थिए थी। जड़ी रीते आंखे हेवर चयोसि कि मौला जो फरमान है दरेक इस्माइली के पोते जे धर्म को जानियो खपे, सिखियो खपे। रसूलुल्लाह जी हदीस है कि इल्म सिखण माटे आंखे चीन वियो खपे तोए विनो। अने ये फरमान है कि दरेक मुसलमान मर्द ने मुसलमान औरत मथे इल्म जो सीखनो फर्ज है। फर्ज ड्यूटी में अची वने, ऑब्लिगेशन अची वने। आवा के हिकिड़ी मिसाल दियां। असांजी प्रथा है कि एंटर थियूं जमात खाने में तो हिकिड़ी सेकेंड हुडा दरवाजे ते असीं उभा रहियूं था। हिकिड़ी सेकेंड उभो रहियो खपे, ॿ पग जोड़ीने थोड़ो मथो नमन करी असीं चयो था हाय जिंदा। बाजू में कोई माण्हू वेठो है या उभो है तो ये जवाब दिए कायम पाया। सैकड़ों वर्षों थी पंहिंजी प्रथा हली अचे थी। इनजो मतलब तो ही आहे हिकिड़ो कि असीं डिक्लेयर करूं था ऐं मूंखे पोते खे चवां थो कि हाज़िर इमाम हेॾा ज़िंदा आहे अने जे वेठो आहे हू चए कि मौला हेॾा हाज़िर मौजूद वेठो आहे। ही पंहिंजे ईमान जी डिक्लेरेशन आहे।
ये पंहिंजे ईमान जी अनाउंसमेंट है अने इनसे असांजो जे ईमान है इनजे संबंधी यादी अचे थी कि आऊं इस्माइली जमात खाने में आयो आहियां अने जमात खानो हाज़िर इमाम जो घर आहे। हाज़िर इमाम हेॾा हाज़िर नाज़र वेठा आहिनि अने आऊं हेॾा इबादत बंदगी करण लाइ आयो आहियां। इंसान के जॾहिं ही समझ ने अवेयरनेस हुए थी तो इनजे इबादत करण जे तरीक़े में मज़हब जी जेतरी रीत रस्म क्रिया कर्म आहिनि इनमें इनके स्वाद अचे थो, मज़ा अचे थो, इनजो मन हल्को थी वञे थो, इनजे अंदर नूर पैदा थिए थो, इनजो ईमान मज़बूत थिए थो, यकीन ने श्रद्धा वधे थी। इन हिसाबे इनजे थिंकिंग में फेरफार पई वञे थो। अॻे अचो ही तो दीनदारो आऊं छा करणो से कि आई मूंखे सवाल पूछो पर मूंखे प्योरली धार्मिक सवाल खपन। एवं सवाल जी कोई जरूर ना है कि काउंसिल करो करे थी ने एसोसिएशन करो करे थी। मुझो काम ही है कि आऊं मजहब सिखाया अने बाकी काउंसिल ने एसोसिएशन जा ही मुखी कावड़िया ने जो चेयरमैन आई इन्हीं के आई पकड़ो मुझे सामने आई धार्मिक सवाल खणी अचो वियो की ना आई कोई क्वेश्चन। सवाल से शुरू करा छेले आज़ी मामी डाइवा तो इनजे फरमान में हिकिड़ो पॉइंट इम्पोर्टेंट हुओ कि आवते 5 वर्ष में टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन थींदी है जिन में तव्हांखे तयार थींदो आहे। मूंखे ॼाणणो आहे कि पंहिंजे कोई टोपरे में लखेलो आहे कि ही टेक्निकल रिवोल्यूशन पूरो होई सके कंहिंखे अॼु जी साइंस प्रमाणे पाणखे लॻे थो कि जे पण होई सके पाणखे आइडिया आहे कि कंप्यूटर जे फील्ड में हुई कि स्पेस जे फील्ड में हुई पर कोई चीज़ पंहिंजे टोपरे में जो पाणखे ख्याल ना अचे अने जो होई सके। मुझे ख्याल में इमाम सुल्तान अहमद शाह के ज़माने से साइंस सीखो अने साइंस में अग्या वधो अड़ा फरमानो इमाम के आइन पाके पण साथे साथे पाके ही पण फरमान थियो है कि आई आज मजहब मथे मजबूत रहो। फ्यूचर टेक्नोलॉजी जे माटे पंहिंजे गिनानू जे अंदर घणी अड़ी रेफरेंसिस आहिनि। दाखला तरीके स्पेस जी ॻाल्हियूं पंहिंजे गिनानू में आहिनि अने से अहिड़ी रीति आहे कि जॾहिं मौला दैत कालिंगा जे साथे लड़दा तो स्पेस में से माण्हू अचदा, मदद अचदी अने आर्मामेंट्स अचना, एटम बम थीनो, एटम बम जो यूज थीनो, ये मड़े चीजों 800-900 वर्ष पहला पंहिंजे पीरो जे गिनानो जे अंदर आई अने आऊं नथो धारा कि दुनिया जे अंदर कोई बे लिटरेचर में हिन संबंधी कोई एटली झूनी भविष्यवाणी कोई बे ठिकाने हुए। हज़रत इमाम जो ही फरमान के फ्यूचर जी टेक्नोलॉजी जे माटे आई तैयार रहो मतलब इनजो ही आहे कि जे फ्यूचर में टेक्नोलॉजी थीनी ये एटली बड़ी एडवांस थीनी कि हेवर कदाच असी इनके कॉम्प्रिहेंड नहीं करी सकूं पर एड़ो न थिए कि आंजो ईमान ही टेक्नोलॉजी के कारण खराब थई वने, आंजो ईमान मजबूत रहे। दारुसलाम में साहब आया सिल्वर जुबली टाणे तो मां फरमायो कि घना साइंटिस्टों कोई नवी शोध खोड़ करन था तो इन जो हेड स्वोलन थई वने तो एटले मथो वडो थई वने तो ही समझन था कि ही असाजी अकल ने होशियारी जे हिसाबे आए अने खुदा कोई चीज ना है पर इन्हीं के समझो खपे कि जिन ब्रेन में से ही टेक्नोलॉजी डिस्कवर थई या इन्वेंशन थई है ये ब्रेन बनाने वालों के એટલે ये खुदा बनाई है, कोई साइंटिस्ट नहीं बनाई। तो इमाम जो चवणो ही है कि जीअं 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 जी टेक्नोलॉजी वधनी तीअं तीअं माण्हू बहु वधारे मेटीरियलिस्टिक थई वेंदनि। इन करता पाण इस्माइली जी आहियूं पंहिंजे धर्म मथे पाणखे चुस्त रहियो खपे। ऐं अहिड़ो ख़्यालु करा
कोई नवाई की गाल न है कि इंसान पोते पर्सनली उड़दो एवर तो असी एरोप्लेन के अंदर वही ने उड़ो था पर मुझो एड़ो ख्याल है कि 5-2 वर्षे के 20 वर्षे जड़ी रीते हकड़ो डाइवर समुद्र के अंदर विने 2 सिलेंडर पुठिया रखे हुए अने पग जे अंदर वो फ्लैपर्स पेरे एड़ी जी रीते पुठ जे मथे 2 सिलेंडर हुए निंडो एंजिन हुए अने इंजे मथे शाफ्ट में प्रोपेलर हुए जिनके साथे पंखा हुन के जड़ी रीते हेलिकॉप्टर जे मथे पंखा आइन अने इंजे हाथ में एक्सेलरेटर हुए अने डायरेक्टर हुए एड़ी रीते गपना मारा तो आगे चा कि हूँ खरेखर हकड़े वक्त मुझे सोने में एड़ी चीज ना रह्यो आया अने जडे हूँ विचार करा तो मुके इनमें पॉसिबिलिटी लगे थी एड़ी एड़ी टेक्नोलॉजी फ्यूचर जे अंदर अचे कोई नवाई जी गाल नहीं इं थी कदाच के हेडा वेठो अहियां अने मुके भूख लगी है अने खाली इच्छा करण से मुझे सामने एकड़ो थाड़ो अची वने साइंस विचार करी रही है कि जेटली चीजों आईन दाखला तरीके ही टेप रिकॉर्डर पियो है ही टेप रिकॉर्डर डिसॉल्व थई वने अने उन जी ताने न्यूयॉर्क जे अंदर ये पाछो उभो थिए एडा ही अदृश्य थई वने एड़ी जादूगरी जी कला साइंस कढ दे एड़ी चीजों नारी ने पंजो ईमान खराब न थिए हजरत इमाम जो फरमान है कि आई इनमें होशियार रोजा क्या जो ईमान सारो रे है अने बई साइड चा कंप्यूटर साइंस है ई साइंस हेवर बहु वधी ना है मुझे लगे तो हार्डली 10% सुधी है 90% कंप्यूटर साइंस अग्या वधनी इन कंप्यूटर जे लीधे घणी जूनी पुरानी चीजों अग्या जे जमाने में जे थई लियो हुनो ई पा रिसीव करदासी अने अग्या वधीने साइंटिस्टों जो चवणो ही है कि कोई पण माण्हू जो बोले तो इंजा बोल शब्दों स्पेस में वाइब्रेशन तरीके रोन था एवर हूँ बोली रही आहियां मुझी जे साउंड वेव्स आइन ये एटमॉस्फेयर जे अंदर फिरी आजे कन सुधी अचे थी पनी मटी न थी वने मुझी साउंड वेव्स आऊं जे टॉक करी रही आहियां ये हेॾा रोंदी अने कदाच बारी बार न खुलन तो बार सुधी पन रे पन ये हमेशा माटे रे ही लोग जो चवणो ही है कि जो ही गाल सच्ची है तो 2000 वर्ष पहला जीसस जी की बोली भी आई ये हेवर एटमॉस्फेयर में आए इनके पन कैच कर जाए अने 4000 वर्ष पहला मोजिस की बोली भी आई तो ही पन आए ने 1400 वर्ष पहला मोहम्मद बोली भी आई ई पन आए अगर जो एड़ी टेक्नोलॉजी कामयाब थई वने तो दुनिया के अंदर घना झगड़ा मटी वनन कारण के मोजिस करो सच्चो चो है ये पाके खबर पड़े ने जीसस करो सच्चो चो है ये पाके खबर पड़े एडी टेक्नोलॉजी अल्लाह करे जल्दी अचे मुझी हयाती में तो बहुत राजी थी तो पांजो मतलब इमाम जो ही हुआ कि अहियां जो ईमान सलामत रख जा भले दुनिया जे अंदर केटली पण उथल पाथल थिए भले दुनिया जे अंदर केटली पण टेक्नोलॉजी अग्या वधी वने भले साइंस नवी नवी डिस्कवरीज करे इनसे पण कोई पंहिंजे ईमान में खलल पैदा न थिए बंदगी इबादत चालू है नारो पीरो जेकी गिनानों में फरमाया आइन इन्हीं लोगों जे वटे कोई दुनिया जो ज़ाहिरी रिकॉर्ड न हो पर ही लोगों इबादत बंदगी में रूहानी शक्ति से हजारों वर्ष पहला सैकड़ों वर्ष पहला ये लोगों पोते जे मन जे अंदर नारी शक्या એટલે જ્ઞાન પાંજે સામે मौजूद आइन अने इन्हीं जे अंदर जे साइंस जी तरक्की थी नी ये गिनानों में आए बिल्कुल आए
question which I suppose has to do with a lot of other youth here in Canada. Youths are not known here. What advice would you give us on how to adjust to the society here? Because the society here has its good and bad points, its freedom, its conventions and everything. What kind of advice would you give us on adjustment? Well, my advice is mix with them and derive good things out of this society, in which this society has lot of good things also. It is like a platter before you in a restaurant. You order for a tea steak. Well, T-bone steak has come. You eat the meat and leave the bones in the plate. Similarly, derive good things, adopt good things, take away good things out of it, and leave the bad things. Now, what is good and what is bad, Hazrat Imam's Farman will show you. Our religion will tell you what is good and what is bad. For instance, drug addiction or drug taking or drug eating, it is not good according to our religion. So we shouldn't indulge in that. Telling a lie is also a bad thing. Stealing, pickpocketing, shoplifting, all such bad habits which is prevalent in this society is bad. I heard some time back, one of the ministers of this province, he shoplifted and got into jail. See, so this is the society in which you are living. We shouldn't indulge in bad things, and bad things are indicated by our religion. So if you study your faith, you will come to know how to live with them. I don't mind talking and mixing and eating with any person in this Canada or anywhere in the world. Even if there is a kafir, an atheist, he can sit with me and eat it with me in one table, but his ideas may not be able to convince me, and my idea might not be able to convince him. But I must follow my path. Carlyle says, my religion is my religion, and other man's religion is other man's religion. That is what Rasulullah was told by Allah. O Prophet, tell these mushrikeens, your religion with you, my religion with me. This is the thing. Your religion with you, others' religion with them. I heard that Islam is the final religion, or the Quran is the final book in like a final chapter in a book. Is that true? Is Christianity, and then was Christianity modified into Islam and things like that? Or is it just separate religions and everyone was expected to convert? Or when human race started on this earth, God also sent his prophets. Normally, without going into minute details, we believe that Adam was the first prophet of God. Thousands of years ago, Prophet Adam brought the message from Allah. That was the first message of Islam. After Adam, Noah came. Noah was also prophet of God. Whatever he brought, it was also part of Islam. Similarly, Abraham, Moses, David, Jesus, all brought some messages from God, and they were Muslim or Islamic prophets. Whatever they brought, it was a message of Islam. All prophets brought Islam.
although in their time, because of the difference of language, the name of religion was not Islam, but all prophets taught Islam. Muhammad brought the message which was absolutely Muslim message, Islam, and it was the last installment. That's what the Quran says. And Quran is the last book which includes Torah, Zabur and Injil. Muhammad was the last prophet, and his message included the messages of all the prophets. We Muslims believe that Abraham, Moses, Jesus, David, all the biblical prophets and all those prophets which have not been mentioned, they were totaling 124,000. They were all Muslims. Every prophet brought Islam, no matter whatever the time and language. But Islam is religion of God. Whatever we were told by any prophet, it was a part of Islam. So Islam is the last installment presently brought by Muhammad, and Quran is definitely the last book. Panchayana that Adam was the first prophet, fellow Nabiwa. And in a simplistic way, he be showing that Adam fellow insan was. So you can what preach for no. અને ગાલી है कि जिन आदम की असी फर्स्ट इंसान जो था ये डिफरेंट हुआ नबी आदम से. नबी आदम ये फर्स्ट इंसान ना हुआ. फर्स्ट इंसान जिनकी असी आदम अबुल बशर चूं था ये एड़ी प्रिमिटिव स्टेज से हुआ कि इन्हीं के उन वक्त नबूवत न मिली हुई. पर दर ज़माने जी अंदर जॾहिं इंसान दुनिया में न हुआ तो पण खुदा जी गाइडेंस ने नूर हुओ मौजूद हुओ. अमुक टाइम में नबूवत ज़ाहिर थी नहीं हुई, अमुक टाइम में नबूवत ज़ाहिर न थी नहीं हुई. मिसाल हज़रत जीसस ईसा जे अने रसूल मोहम्मद जे विच में आसरे 600 वर्ष जो डिफरेंस है. अलबत् 600 वर्ष के दरमियान कोई ज़ाहिर प्रॉफिट नहीं थिया, पर खुदा ताला जो नूर इन दुनिया जे अंदर मौजूद हुओ एटलो ज के इन जी अनाउंसमेंट न थई. अहिड़ी ज रीते नबी आदम जे फर्स्ट नबी हुआ, इन पहला आदम रेस दुनिया में हुई. कारण के जो आदम रेस दुनिया में न हुए तो ही नबी किन माटे थिए. पोते माटे नबी जी जरूरत ना, नबी तो पॉपुलेशन माटे खपे. એટલે જે આદમ जिनके असी फर्स्ट इंसान छो था कि नबी ना हुआ. नबी तो घणो पछी आए यानी घणा आदम थी आए. मौला अली के हिकिड़े वक़्त पुछण में आयो या मौला आदम पहला कूड़ो हुओ तो फरमायो आदम हुओ. थोड़ी बार रही वो मारू की समझ में न पई तो ये या मौला हुन आदम पहला कूड़ो हुओ. मौला फरमायो हुन पहला आदम हुओ. ए इंसान सब उनके चोन था तू मुके 3000 वक्त पूछने कि आदम पहला कूड़ो हुओ तो चोंदो सी आदम. समझण वाली चीज है पर मुश्किल है. ये 3000 आदम थिया. जो मतलब ही थियो कि ही पृथ्वी मथे घणी सिविलाइजेशन्स थयूं आहिनि. ही जे पंहिंजी अर्थ आहे पीरो जे चवण जे हिसाबे इनके 300 बिलियन ईयर्स थिया आहिनि. अने इन जे मथे घणी वक़्त सिविलाइजेशन पैदा थई आहे, मटी वई, पाछो अमीबा से चालू थियो, इंसान सुधी पहुंची, इवॉल्व थई, साइंस बहु वधी, पोइ ही साइंस जे लीधे पोते मरी विया ने दुनिया बर्बाद थई वई. पाछो ॿिए ठिकाने अमीबा से पाछो चालू थियो. अहिड़ी तरह ही अर्थ जे मथे घणी वक़्ते
इंसान जी हस्ती थई है, मटी वही है, पाछी थई है. But this is now is the last time. मुझे पंहिंजी जमात खाने जी रीत रस्म पर सवाल पूछना सवाल है. हिकिड़ो आहे कि जॾहिं पंहिंजो कलमा बोलूं था तॾहिं घणा हथ मथे ॿियो हथ रखीने ही करनि था अने घणा ज़मीन ते हथ रखीने 3 वक़्त पाठ करण लाइ इलाहा करूं था. तो कयो सचो मतिलबु आहे ने इनजो असल मतिलबु पूरो आहे ने ॿियो घटपाट मथे जॾहिं बत्ती ॿारूं था इनजो मायना पूरो. हाँ बहुत राजी थियो. ये सवाल पूछा बहुत राजी थियो. ने मुझे याद हुआ कोई वक्त के याद अचो तो हम चवंदो से घणा माण्हू जो खड़ा उभा हूं अने हथ मथे ही हथ रखीने अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलमो पढ़न तो वकाए पन वेठे वेठे पाण खे ही हथ 3 वक़्त जमीन मथे रखियो खपे. इन जो मतलब ही है कि आऊं जिदो सिजदो कियो आहियां ही सिजदे जी जगह आहे जे धूड़ आहे ही धूड़ आऊं गिनी मुंहिंजे मुंह ते मला तो पोते जी हम्बलनेस जे कारण आजिजी जे हिसाबे अने रसूलुल्लाह करना हुआ कि जेड़ा सजदो करी कोई जेड़ा सजदो हुओ एड़ा से मिट्टी कदी धूड़ गिनी अने मुंह मथे मलना हुआ. साइन ऑफ ह्यूमिलिटी अने 3 वक़्त पांखे कलमो बोलियो खपे. माण्हू खे ख़बर न हुजे करने अमुक माण्हू तो ही करी छॾनि था, मुंह फिराईंदा था. घणा माण्हू ही जे मथे करीने पग मथे गिनी गिननि. बराबर पांखे सम्झियो खपे कि ही हथ जमीन मथे रखी अने 3 वक़्त असांखे कलमो पढ़ियो खपे अने खुदा ताला जे हुजूर जे अंदर असी नाचीज़ आहियूं, तुच्छ आहियूं, धूड़ मिट्टी जहिड़ा आहियूं. या मौला तू मालिक बादशाह आहीं ऐं आऊं कीन आहियां. ही इन जो मतिलबु आहे. जमात खाने जे अंदर जॾहिं असी गटपाट जो क्रिया शुरू करूं था तो इन जे बाजू में बत्ती रखण जो कारण ही आहे कि सिंबल ऑफ जोत मौला जे दरबार जे अंदर जमात खाने जे अंदर मौला जे नूर जी जोत आहे. अने ही जे पानी आहे जिनके असी नियाज तरीके पीऊं था ही पानी हज़र इमाम जे हथ जो आहे. मौला पोते नियाज बनाई पानी के पवित्र किया अने ही जोत इनमें विझी आहे पानी में. इन जी निशानी ने सिंबल जे हिसाबे जमात खाने में गटपाट वटे असी जोत रखूं था. अने मुझी अर्ज है कि ही जे बत्ती है घटपाट चालू थिए इन पहला ही बत्ती बारी खपे. घणी वक्त माण्हू भूली वेंदा था पण बत्ती पहला बारी खपे अने पोइ घटपाट थापण जी दुआ ॾियणी खपे. असांजो सैटरडे क्लासिस में टीचर साथ में आर्ग्यूमेंट थियो हो कि ये जे पाण लाइट ॿारूं था इन जो कारण ही आहे कि अॻियां जे वक़्त में इलेक्ट्रिसिटी न हुई तो जॾहिं घटपाट जी दुआ ने पढ़णी हुई शाम ने सफ़ाई करण लाइ ने तो 4 बाजिया जमाखाने जे अंदर दरेक ठिकाणे मीणबत्ती रखण में अचणी हुई. तो एटले पाण इन के अॻियां मीणबत्ती रखना हुआ घटपाट जी सेरेमनी लाइ कि लाइट मिले. तो हाँ सचो मतलब क्यों कि लाइट सिंबलाइजेज नूर ऑफ हाजिर इमाम कि लाइट सिंबलाइजेज टोटल रोशनी मीन्स ब्राइटनेस. पीर सदर जिन के जमाने में मीणबत्तियों न हुयूं कारण के जे मीणबत्तियों आहिनि ये ऑयल में से निकरन थियूं कि जे ऑयल जमीन में से अचे तो इनके जे टार वगैरह थिए तो इन पहला ऑयल निकरी वने कोई इन जे अंदर से जड़ी रीते पेट्रोलियम जेली निकरे थी अड़ी रीते ही इन में से कढन था ऑयल में से. अलबत्ता कि सदरुद्दीन जे अने इन पहला जे जमाने में राजा महाराजा ये मद जी मीन अचे थी
इनमें इनके बारी ने रोशनी करना हुआ पण ई एटली बधी कीमती ने मोंघी चीज हुई कि गरीबों जे वटे शक्ति न हुई हेड़ी मीन बत्ती बारन जी। अने पी सदरदीन जे ज़माने जे अंदर जमत खाना समी शांत जो हुंदो अने बत्तियों वगैरह हुयूं, घी जा दीवा बाल न हुआ। ई जे घी जा दीवा जमात खाने जे गटपात जे वक्ते 7 दीवा बार न हुआ। इन जे अंदर रोशनी जो कारण एम न आहे पण सिंबोलिज्म आहे इमाम जे नूर जी। मेटीरियल डिराइवेशन ई थई सके के भाई न्याज पीनता ने पाके रोशनी खपे एटले ही बत्ती बार न हुआ। ही रीजन न हो, रीजन तो सिंबोलिज्म हो इमाम जे जोत। वो रीजन बराबर नहीं। रीजन के जे लाइट जे वो रीजन न बराबर नहीं। रीजन सिंबोलिज्म है इमाम जी जोत। You should have ambition to improve the worldly condition of your Jamat. कई बार पांगे कहता कि इंसान ने खुदा के रूप में बने हैं, दया है, generosity है, बड़ी चीज जो है, तो पैसे से आगे कंसर्न करी सकते हैं। On the one hand, पांगे कहते पांच समझ नहीं ना तो पांगे का organ से let him improve the worldly condition. How can that go against the principle of Islam? ना पहली गाल बेटा ही है कि इंसान जो शरीर है, इंसान जो पोते जो नहीं, your body doesn't belong to you, it belongs to God. And how can you just use your body in the way you want? Why not in the way God wants? This is what I'm trying to understand. Wouldn't God want you to be generous? Well, we have to ask God whether He wants it or not. But then we have an intellect. Should we not use it? No, intellect is not sufficient. It is the Imam who will guide you. Only Prophet and Imam can tell you. And so far there is no such farman that you should donate. I derived it from the thing that Rasulullah has forbidden to mutilate body. Because in Islam suicide is also forbidden. Islam it is forbidden to cut any limb, even of your foe or enemy. And when man is dead, the dead body is respected in Islam very much. And that is the thing I derived out of that. But it is other Imam who will say the final yes or no. This matter has gone to Hazrat Imam and we are waiting for it. I personally believe we shouldn't give any limb to anyone. And I mean, war you have said, okay, no, for war we wasn't, we don't want to mutilate our enemies, I can understand. But if it is for a good cause, but this is where the conflict arises anyway, how am I doing it? So, How can you say it is a good cause? Your any parts, suppose your heart may not be accepted by the other man's body. If it is rejected, then what is the use? It is an attempt which is doubtful. Yes, but very less. Hardly 0.1%. This science has not yet developed into the stage where you are definitely giving something to someone. No one has ever lived more than 2 years.
and under great difficulties. No one has ever become absolutely healthy after receiving some limbs and organs. No one. He might be in more difficulty if you give your kidney. He might be in more pain and sorrow, and the path may come on you to a little extent. Who says? Panjayida Motilda Jamat में हमको कहता है कि the son donated kidney to the father. He's still living and both are healthy. Fine. થઈ શકે કારણ કે father અને son આય હકડો જ blood હોਣ જે કારણે ही possibility આય. So हीरा रजा आए donate करण. ના આવું રજા जी કાલ નતો કરા. मुझो फाइनल हुक्म ना हले इनमें. ये तो हाजर इमाम जी अंदर यस नो चोय. बाकी आऊं तो इस्लाम जी प्रिंसिपल जे आऊं समझी शक्यो आया इन हिसाबे चां तो यही चीज बराबर नहीं. Let him ask. No, come on. But he related by Islam में doesn't take blood donate करूँ था. It's accepted by Islam, isn't it? गालियाँ के blood is regenerated in your body. If you give kidney, can you produce another kidney in you? No, but suppose that we have two kidneys, isn't it? Yeah? Okay. If we have two, you can give one. Like in blood, you have 5 liters of blood. If you give 1 liter, even 4 liters, even 6 liters. A man can donate about 5 gallons in 20 years' time. That doesn't matter because if you regenerate blood again, blood is lost, blood is regenerated, blood is consumed, blood is a different thing. But an organ of the body, like kidney, heart, or liver, this is a difficult thing. And there is another thing. When we talk about Ismailism and consider this particular question from Ismaili spectacle, why a man is suffering? Number one, because he has broken the laws of nature, so he is suffering. He is guilty. So let the law of karma take place. Let him suffer, because by suffering, his guna is forgiven, forgotten, pardoned. We do not only see from Ismaili point of view, but we also see from general Islamic point of view. And Islam says, every pain and sorrow is because of your own sins. So they must suffer. So let him suffer. Yes, let him that's suffer. coming from God. But at the same time, Islam में जो है तो कोई मारू गरीब है, जो दुखी है, इनकी मदद करो. Exactly. But नहीं सुना कि मतलब ये गरीब है तो इन्हें मत से कुछ मोकलेगा गरीब. बड़े चीजों हूँ जे करने कुरु है कि जो आऊँ सफर करना हुआ मुझे गुनाह जे करने अने तू मुझे मदद करे तो तू शो करे तो काइंडनेस टुवर्ड्स मी एंड इट इज एक वर्च्यू, इट्स इबादत. पर जो खुदा के ही मंजूर होंदो तो तोजी हेल्प मुके कम अचदी. जो खुदा के मंजूर न हो तो तोजी हेल्प जे करने ते छता हूँ दुखी तो रहंदो से पण तोके सवाब मिलदो. मुके जे दुख उपाड़न जो होंदो ये दुख उपाड़न न होंदो तोके सवाब मिलदो. એટલે સફરિંગ જો હું ઉપાડા અને તું મુજી મદદ કરે તે છતાં કદાચ મુજી સફરિંગ ન પણ મીટે તો કે સવાબ મિલે. એટલે અસાંखे હુકમ आहे કે અહીં બેન जी મદદ કરો અને મદદ કरण में फायदो आहे. પણ लाजिम नहीं कि मुंहिंजी मदद से के तुंहिंजी मदद से कोई जी सफरिंग मटी वञे. सफरिंग मटे या न मटे ये ॿियो सवाल, पर पाण मदद कई खपे. अने ई जे चीज आहे न कि कोई शरीर जो ऑर्गन ॾिनो ये हेवर बहुत प्रिमिटिव स्टेज पे आए. हेवर सुधी इनमें कोई जाजी सक्सेस मिली नहीं. हिकिड़ो केस अहिड़ी थी आहे कि फादर एंड सन जो आहे तो फादर एंड सन जो केस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस थी सके. इनके अंदर मूंखे कोई जात जो ऑपोजिशन न आहे. आउं तो इस्लामिक प्रिंसिपल्स जी ॻाल्हि करां थो
આકડો માડું હોય, બહુ સફર થયે તો, બહુ જ સફર થયે તો, અને he suicide કરે તો સફરિંગ में से बची भी नहीं ना, પણ ઇસ્લામ છે તો કે suicide હરામ है. Let him suffer, not to commit suicide. એની જજમેન્ટ ખુદા સિવાય કોઈ ન દઈ શકે. So I have a good example in that. It's saying that Germany and you saw a picture that the baby was born with hands upside. Picture na, I saw personally the baby, not the picture. So full of hands were upside. इंजा ही हैंड सीधा हुआ at shoulder. And it was pretty deformed, and I tried to well in the things they put it repair for it, right? But never thought they look an article que women y lo que puede que neglect करता and also that the medication it affects the baby. Okay, so how can we say that maybe it was not the mother's negligence that is responsible for the baby? Maybe. Then, how this baby was suffering? Why? I know, but it's so very unfair. It's so important that the parents be responsible, take care as to how and think of the Just now you say that the mother might not be responsible for it. So you just stated that mother might not be responsible No, for it. this is what I'm trying to question you. You're saying that the mother may not be responsible, perhaps it's the child's karma. That is No, I didn't say mother was not responsible. Mother was responsible to some extent on her part, and child was responsible on his past karma, on his part. Both were responsible at their own level. God killed with one stone so many birds. You follow what I mean? There is a saying in English, kill two birds with one stone. So God may kill so many birds with one stone. Reincarnation does not exist, it does exist. આવું ના કહો શકી પણ તું ચોઈતો કે તું નહીં આવ્યો ને સુની સુનાઈ ગાલ કીધા से निकली આવી આવું ના કહો रीइंकार्नेशन की गाल જ ન हुई वो बेबी चाहिए होती जे तू सिटिंग करो वैंकूवर में करो वैंकूवर में वो सेमिनार अटेंड किया was on reincarnation. And yet it is assumed that what you're trying to say, the reincarnation is here, and when you come here, you are here for a purpose. That baby that you saw, which was from mango, is paying for it. It is his punishment, and that the parents have to suffer. I believe that the same thing. You are right. So this refers to that philosophy is true, that reincarnation does exist. It does. We are all here as punishment, or as to fulfill something, or as to pay back something that we owe to somebody. I believe so. મિસ્ટરી સાહેબ રિઇન્કાર્નેશનની વાત આવી જનરલી ખાસ કરીને સુન્ની મુસ્લિમ સાથે વાત કરતા તો લોકો કહેતા કે ઇસ્લામમાં રિઇન્કાર્નેશન જેવી કોઈ ચીજ આવી જ ના તો મુસલમાન generally generally मुसलमान बिलीव नथा करे पण हिकिड़ी बुक डॉक्टर मिर्जा बेग बरेली में से कि 40-45 वर्ष पहला इंग्लिश में हिकिड़ी बुक लिखई रीइनकारनेशन इन इस्लाम अने ही 27 वर्सेस ऑफ कुरान जी रेफरेंस ॾिनी आहे ऐं पोते जॾहिं ही रेफरेंसिस नारियो से तो मूंखे पंहिंजी चीज जी ख़बर पई कि क़ुरान शरीफ़ जे अंदरि अहिड़ी मेंशन आहे कि इंसान पास्ट लाइफ में जी रहियो हुओ अहिड़ी ज रीते इनके फ्यूचर में पण लाइफ मिलंदी until he progresses, makes progress, develops himself to perfection and unites with the ultimate nur of Allah. એટલે
ही चीज आहे, पास्ट लाइफ पण आहे અને ફ્યુચર લાઈફ પણ આવે કોરાને શરીફની આવે. મુસલમાન જનરલી બિલીવ નથા કરે અને જનરલી મુસલમાન ઇમામત કે પણ બિલીવ નથા કરે. તો કુરાન જી ઇન્ટરપ્રિટેશન મથે આવે. મુસ્લિમ્સ they don't believe. We believe. સાયન્સ રિસ્પોન્સિબલ आहे પણ जो साइंस जे मथे अमल करण वारा के साइंस में से फायदो गिनन वारा, बेनिफिट गिनन वारा जो मजहब के साथे रखन, तो मजहब जी ताकत जे लीधे साइंस जी जे बैड साइड आए, डिस्ट्रक्टिव साइड आए, ये बची वने. फॉर इंस्टेंस रेगन અને હેવર કેરા મૂકે નામ યાદ ના પણ ચરિયન કો તો ગુજરી ગયો. ही ब सुपर पावर्स जे प्रेसिडेंट्स आहिनि सॼी दुनिया जी जे फेट आहे ही ब माण्हू जे कब्जे में आहे. हींअर ही ब में से कोई जो मगज जो खराब થઈ वञे અને हॉट लाइन के इमीडिएटली जो टच કરી દે એટલે પતી ગયો. ही જાય ને वर्क सिचुएशन. પણ जो बे साइड में धार्मिक विचार वारा हूं, सारा नेक हूं, इबादत वारा हूं, तो दुनिया जी डिस्ट्रक्शन न थिए. साइंस दुनिया जी डिस्ट्रक्शन नहीं करे. नास्तिकवाद, नो बिलीफ ऑफ गॉड जे है, इनके असी इंग्लिश में चवंता एथिइज्म, डिसबिलीफ, अधर्म, कुफरपणो, ही चीज दुनिया के नाश कर दे. नॉट साइंस. पण जे मारू अधर्मी हुंदो अने नास्तिक हुंदो, काफर हुंदो, ही साइंस के यूज कर दो फॉर डिस्ट्रक्शन. એટલે હકડી તરફ મતલબ આए, धर्म आए, बई तरफ अधर्म आए. बिलीफ एंड डिसबिलीफ, ईमान अने कुफ्र, ये बड़ी लड़ाई है. અને જે સાયન્સ કે વધારે યુઝ કેર કર દો, કુફર કર દો. એટલે કુફર જે લીધે સાયન્સ जी શક્તિઓ યુઝ કરી दुनिया के डिस्ट्रक्शन में पीजी दो. बोल. Okay. Give him the mic. It's written in the Quran that every 40 miles, I think, there will be one light, and that's where the soul will live. Some great disaster will happen. Is that nuclear war or anything like that, or is it the earth colliding with the sun or something? And what does it symbolize? Every 40 miles the soul will survive, and that brings in the question that creation is eternal. So how can the world come to an end? Who told you about this, Gina? We always have discussions. He wants a good explanation of it. ના પણ ઈ 4 માઇલ જી ગાળ કીના શીખવાની આયો? 4 માઇલ ના ઈ એક્સપ્રેશન બી જણ માંગે તો કે અમુક ગાંવ કે તે જ્ઞાન में પ્રિડિક્શન આય तो he wants to correct એરી પ્રિડિક્શન આય. એ સમસ્યા था કે 12 કોસે દીવો બરે. 12 કોસ इज 24 माइल्स. 2 माइल जो हकड़ो कोस हुए એટલે 24 माइल जी रेडियस में हकड़ी बत्ती बर दी. ये बत्ती जो मतलब है अंदर जी नूरानी बत्ती. એટલે 24 माइल जी रेडियस में हकड़ो माण्हू हूंदो के जे इबादत वारो हूंदो अने इन जे दिल में खुदा जो नूर हूंदो. ही इन जो मतलब है.
दुनिया जे अंदर नास्तिकवाद ने कुफ्र एटलो बधो वधी वेंदो, वस्ती बेहिसाब हुंदी। एवं तो नारो हेॾा जे मॉन्ट्रियल में रात जो नारियो से मूंखे लगे तो बिलियन 2 बिलियन बत्तियों हुंदियूं। दरेक 100 मीटर मथे हिकिड़ी बत्ती भरे थी। पर ही बत्ती जे पीर जी ॻाल्हि करनि था गिनानो में, ही इंसान जे दिल जे अंदर खुदा जी मोहब्बत में जोत जी जे बत्ती आहे। ही 24 माइल जे रेडियस में हिकिड़ो माण्हू हूंदो। दुनिया घणी वक्त डिस्ट्रॉय थई आहे अने ही डिस्ट्रॉय थई आहे नॉट द अर्थ itself but the things in this earth destroyed many times. So there won't be third world war. Third world war तो थी नहीं, चौकस थी नहीं, and very near within this century. बंद की खूब करो। And Canada will not be involved, inshallah. नरो ही जे दुनिया है पंहिंजी अर्थ इन मथे घणी वक्त डिस्ट्रक्शंस आवी आहिनि। ऐं कोई वक्त नेक्स्ट टाइम ॾींहं जी फ्लाइट गिनो गोइंग टू यूरोप अने मथे से नीचे न एटलांटिक जे अंदर बिटवीन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका असी मथे से नारी शकूं था कि आज से हजारों वर्ष पहला हिकिड़ो नंढो कॉन्टिनेंट हुओ, इन जो नाम हुओ एटलांटिस। ही एटलांटिस कॉन्टिनेंट हुओ, ही जमीन सॼी ज़मीन, ही अर्थ, ही भाग पानी जे अंदर मर्ज थी वियो आहे। मथे से नज़र पन अचे थो। हजारों वर्ष पहला एटलांटिस मथे सिविलाइजेशन बड़ी पावरफुल हुई। ये लोग मटी विया। मैक्सिको विनो जहिड़ी रीते इजिप्ट जे अंदर पिरामिड्स आहिनि, जो कि पिरामिड्स कोन जा आहिनि अने हेॾा थोरो फ़र्क़ु आहे, पर हेॾा पण पिरामिड्स आहिनि मैक्सिको में। इहे हजारों वर्ष पहला जी सिविलाइजेशन के डिपिक्ट करनि था कि दुनिया जे अंदर घणी वक्त सिविलाइजेशन थई आहे अने पोइ बर्बाद थी वई। तो हेवर पनी थीन वारो आहे। यस दुनिया जा कीड़ा धर्म आई कीड़ा बोल ओछी हमारे ओछी जे बाद दुनिया जा कीड़ा धर्म नहीं there is more board there. And I think if you look at the situation globally, there is more conflict based on religion. For example, England may get basically the Arabs and Jews, Iran, Iraq, Sunni and Shia. India may now constantly come out, Punjab, Pakistan may now Muslim, India and Pakistan may come out. Whereas if you look at the communist world, there is less coming out in less sense. So, can you explain on that? Your study is not correct. ये मड़े जो वॉर्स थई रहियूं आहिनि जे तूं जस्ट हेवर थी आहे, इन जे पुठियां हेतु मज़हब न आहे, इन जे पुठियां पॉलिटिक्स आहे। बेलफास्ट जे अंदर अॼु 15 वर्ष से जे कैथोलिक्स ने प्रोटेस्टेंट्स लड़ी रहिया आहिनि, ये लोग not for the sake of Catholicism and Protestantism, it is for the sake of land. IRA वारा इनके ब्रिटिश के चवनि था कि हाणे हिन से निकिरी वञो। ही वॉर जे आहे जेतिरी तूं नाम गिणे आहे, ये रिलीजियस वॉर्स न आहिनि। देयर इज अ पॉलिटिक्स बिहाइंड। अने क्योंकि ही साइड में नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज जे अंदर फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड मूवमेंट्स होने के कारण अहिड़ा कॉन्फ्लिक्ट तर्त ॿाहिरि अची वञनि था। जॾहिं कम्युनिस्ट कंट्रीज जे अंदर उधर तो जबरदस्ती से परसेक्यूशन आहे माण्हूअ जी, माण्हू उभा ज नथा थी सघनि, कोई बोली नथी सघो। हैव यू गॉन टू मॉस्को? गो सम टाइम। आई हैव गॉन टू रशिया। हिकिड़ो माण्हू खिले नथो, मड़े जा मुंहुं उदास पे आई, कोई खिले नथो। कम्युनिस्ट कंट्रीज जे अंदर माण्हू जे रहनि था जानवर जहिड़ा रहनि था, इनखे बोलण जी रजा न आहे। कोई पण टूरिस्ट ॿाहिरि से हलियो वञे अने ही टूरिस्ट रस्ते जे अंदर कोई माण्हू खे उभो रखीने जो ॻाल्हि करे, वो माण्हू ॻाल्हि करण में तैयार न, भगी वञे। एटला ई लोग बिहामनी हालत जे अंदर कम्युनिस्ट कंट्रीज में रहनि था। अने ही कंट्रीज में जे तूं इंडिया जी अने पाकिस्तान जी
અને ઇરાક ને ઈરાનજી ही જે લડાઈઓ जी ॻाल्हि करे तो ही कोई रिलीजियस वॉर्स न आहे. There is politics behind. But by chance they are talking about religion. Religion never tells you to fight and destroy others. અને આકડો મારું હોય આમ તો કે દાખલો दिया तू एजुकेटेड बॉय आई है माविया ने अली लड़दा हुआ एडा अली जो लश्कर हुआ एडा माविया जो लश्कर हुआ अने अली जो लश्कर मारी 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 माविया जे लश्कर के फना क्यों अने माविया नारे के हाणे मौत नजीक अचे थी उमरवास के चई भई की रस्तो कर ने तो असी तो हेवर मरी विया आहियूं तो हू करो कई रिलीजन के यूज कई कुरान जी चौपड़ियों गिनी पोते जे नेजे मथे लटकाई अने पना मंगे. मौला अली के खबर हुई कि ही रिलीजन न है पण अंदर पॉलिटिक्स है. मौला चयो कि भाई ही मूंगो कुरान है हूँ बोलतो कुरान है लड़ो पण मौला जो लश्कर जे अंदर माविया जा मारू हुआ એટલે ही वॉर बंद थई वई. चवण जो मतलब करो है कि रिलीजन कोई लड़ाई चालू नहीं कई पण मारू रिलीजन के पॉलिटिक्स जे कारण यूज किया. And in all these wars that you have just referred, there is politics behind, not religion. बोल बाबा. nuclear holocaust theory within this century. हाँ within this century जी nuclear holocaust जी काम नहीं करे. हाँ ही जो सके third world war थी नहीं. I didn't say nuclear war. That a war theory. हाँ. Is there a chance if Islam will survive? Yeah, religion will survive. Next century is Islamic century, Hazrat Imam has said. Islam will come up as a great power. Will it conquer as it did before? Yes, but not in my and your life. It will conquer. The whole world will become Muslim, but the population of world at that time will hardly 300 or 400 millions. But it's in the Bible where it's written that at a certain time where all shall be as one is God, will be as angels, and then again the devil will emerge. Will that occur? But it says in the Bible, and yet it says in the Quran. Now, which is correct? You said that all religions are preaching the same message of Islam. True. True. But then the Christianity that you find in the Bible is not the real Christianity. It is the Paulian system. Paul has brought this present Christianity, not Jesus. And they have polluted and altered the gospel of God. We believe in Quran. We also believe in Bible, but the part of the Bible which tallies with the Quran, and there are so many things which tally with the Quran. There will be a good period, 125,000 years of tranquility and happiness. There won't be any crime, there won't be any lawlessness, there won't be any sin during that period of 125,000 years, and that will be the best period of humanity on earth. It will be, I think, in 22nd century, maybe in 23rd century, but good time will come, and that will be Islamic time. Whole world will become Muslim. I will give you a little, just a little glimpse what I have gathered from Quran, Hadith and Ginans. There will be a series of war for the next 100 years. A third war, after that fourth war, may be smaller than the fifth war, but there will be a series of wars for the next 100 years. Population will increase much. Science will increase powerful. Man will become, in population and number, very much higher. Man will be very intellectual. But
with the material progress and development, there will be less and less spirituality, less and less ethics and good things. Man will suffer more and more. Food will dwindle. There will be many comforts, but man will be unhappy. After 100 years, approximately, there will be a great war. Now before that war, there will be a war between Christianity and Judaism one side, Islam and communism on the other side. Communism and Islam will become friends. I shouldn't say Islam, I should say Muslims, not religion but the community. Muslims and communists, they will become friends and they will fight with the rest of the world, that is Christians and the Jews. Jews and Christians will be wiped out, inshallah. Then there will be a war between Muslims and communists, and then communists will be wiped out, inshallah. Muslims will remain, though in a very small number. 80% of the world will be destroyed, and there will be a restart of happy period which will last 125,000 years, but at that time there won't be any aeroplane, there won't be any motor car, there won't be electricity. All the modern facilities and comforts will be destroyed. Humanity will start afresh. No one will trouble no one. All will be happy, scattered. Are you worried? We had Alwaez, an elderly woman who came and had a seminar that you're having today, just for British students. And she said that life today is of a dream of some great creator. When the creator arises, life will end. And yet is this possible? Is this philosophy of ours true? Can it be proven? Or is it a mere... No, she said right. I'm telling the same thing. No, you're talking about material world. She said that as we exist today, it's got a dream in somebody's mind. When it arises, when he wakes up, the dream will end. She meant, I think probably, that man's life is like a dream. And when man will die, he will realize that his life was a dream, and now he has awakened from that dream. I think she meant that, which you might have not taken in the sense. That is true. It is according to Quran, that life is but a dream. Yeah. The prediction that you made, can you give us an example of the source? I said Quran, Hadith and Ginans have given me this. I cannot give you the particular page or particular book. Study these things which I have studied. There are Ginans which contain about Daint Kalinga. If you read Ginans, there are many hundreds of Ginans of this kind. And you will find even the date of that time when the start of a happy period, according to our Ginans, it will be Sat Yug or Ratan Yug. The date, the day, the time, the place, the year, and the name of the Imam of that time are given in Ginans. Can I
just make an announcement. Panje schedule pramane banke hakra wage patainu hai. So can we have short questions and fast? नरो 15 मिनट 14 मिनट बाकी हैं. हाँ बोल. तो के गमे तो ना तो भी के छड़ी दे. So this is, you alluded to like, okay, that's the responsibility. Martha said about you were sick. Hasmam ke forman saja dan itu chalo to ke gaye forman hasmam saja ke घर की सफाई ये बड़े children's job bringing by you must say. भाई जो नहीं चला पूरा. But the thing is, कि यहाँ he says women are ambitious too in terms of just improving themselves, not in terms of conquering worlds or anything of that nature. Maybe naturally. But I'm trying to get how women try to improve in life. So how is there a conflict in fulfilling her ambitions in that respect as well as maintaining her roles? And what are the specific roles that Islam gives an indication? Well, if you talk about Islam, then certainly there are many things which you won't like. As you said that others will not like. I say here you won't like personally. Islam, if we read Quran, we come to know that God has created men and women in different forms for different purpose. Women are ambitious, of course, they should be. I'm 100% no, but 101% with them. But there must be religion between man and women. What I meant that our society presently in Canada, Ismaili society, is deteriorating in the sense that our family life is deteriorating. Love and affection, comfort and pleasure, and amicability is wiping out. For 2-3 months, if the husband is out of work and the wife is working, then she thinks that she is the master of the house just because she is earning money. That was my speech, my aim. Because this thing has happened in Canada, so the wife is thinking in that term, because Canadians, they think in that term. But if we live in eastern side, not one but I've got many instances right now in my memory that husband became invalid and the wife worked and maintained the family for nearly 32 years. She never uttered a word against her husband that you have become a burden on me. But if that is the case here in Canada, the wife would divorce him, send him to the invalid house and be on her own way. This is the difference between eastern side and the Canadian side. Hazar Imam tells us that you may live wherever you like, but do not forget the traditions of your forefathers and your ancestors. Your eastern traditions must be kept, and that is the thing that we should sacrifice for the sake of our family members. We should love for them. If one is suffering, I'm also suffering with my wife or with my child or with my father. We must all share suffering and happiness. But here, people are becoming more selfish. And I've got so many instances here, particularly in Toronto and other sites, just for a little, very small matter. What the small matter? The husband could not find any job for 1 year, and she divorced him. So that is the thing I was telling. According to Islam,
head of the family is the husband. He is the head of the family. But here in Canada, it is not the matter. A child may be named after father, or now it may be named after mother. In Islam, it is against. It is thought as an illegitimate child if he is named after a mother. It is not allowed in Islam to name the child after a mother's name. Isn't that a discrimination? Huh? There is a discrimination. So is God a discriminator? Yes, between Kafir and Mu'min, God discriminates. Something bothers me. ઘણી વખત otherwise the lectures, they all concentrate on the women not being proper. Why is there not an equal sign or given to men not fulfilling their responsibilities? Like statistics show I agree with you. Out of in 6 minutes, either one child or one woman is being beaten up by a man. We don't hear about it. In our Jamat, this thing happens. We don't hear about it. But when one woman perhaps leaves her husband because he's not working, that is publicized. It's not fair. I mean, because women are trying to fulfill their role, but then it has to be counterbalanced. And if it is not balanced, there's no harmony. So it will be, To some extent, I agree with you. But the other extent, I don't agree. I tell you, men and women can never be equal. You agree? So we'll full stop here. I agree in that respect, but what I'm saying is that a lot of concentration is given on women's responsibilities and not enough focus on men. I mean, but get it done. मुझे कोई इंसिडेंट है कि that पंद्रह से चला हो जाए मार के ही करेंगे. हम घनी वक्त चाहतो कि अगर जो men and women गिंजे आप घनी वक्त चाहतो in my voice मर्द लोग को વધુ बदमाशाई women करता मर्दों में वंग ओछा नहीं बहुत जी चाहिए पर स्त्री से आए ना न भाइयों जा दिल खुदा नरम बनाए भाइयों में रहम दया ही चीजों વધુ आई मर्द में ओछी आई पर जो मर्द हकड़ी साइड में छड़ी दे અને જો બાઈઓ જે અંદર જુલમ અચીવીને અને જો બાઈઓ જે અંદર સખ્તી ને હાર્શનેસ અચીવીને તો જે ફેમિનિટી હોય ને એટલે સ્ત્રી પણ હોય મધર પણ હોય ઇનકે લાછન લગે તો મધર દુઃખ ઉપાડે અને કોઈ દી બચ્ચે મથે જુલમ ન કરે ન થીન દે પણ આવું ના રહ્યો અહીંયા આકડી છોકરી 3 વર્ષની आकड़ो छोकरो 4.5 वर्ष जो इतने मासूम बच्चे के छदी आकड़ी छोकरी 28-29 वर्ष जी हस्बैंड के छदी बे साथे भगी हुई मर्द करे इनमें इतलो दोष नहीं कारण के मर्द जालिम आए जबरो आए बदमाश आए 90% मर्द खराब आए 90% पण भाइयों जे अंदर नरमास प्रेम दुख उपादन जी शक्ति जी आहे जॾहिं बाइयों जी अंदर हिकिड़ी मां वाइफ हुए तो वंदो ना पर हिदा मां जी ॻाल्हि करा थो कि मां बो मासूम बच्चे के सेक्स जे कारण सेक्सुअल हैप्पीनेस जे कारण मर्द के छॾीने हली वई सो ज़ुल्म अने अहिड़ा घणा इंस्टेंसिस थिया आहिनि बेटा अने थई रहिया आहिनि पंहिंजी क़ौम में हेॾा कैनेडा जे अंदर ऐं जमात जो नाम नथो ॾियां ऐं माण्हूअ खे ओळखां थो जमात खे ओळखां थो ऐं जनरल ॻाल्हि करां थो कि पंहिंजी बाइयों जे अंदर जे बाईपणो आहे स्त्रीपणो आहे जे मांपणो आहे फेमिनिटी आहे ही ओછી થઈ રહી आहे કારણ કે हिन जी सोसाइटी ख़राब आहे जो धर्म जे अंदर रहियो जो मज़हब जे अंदर रहियो बंदगी करो इबादत करो रोज़ खाने अचो फरमान सुनो अने पोते जी लाइफ के इस्माइली धर्म प्रमाणे हलायो तो हिन जी सोसाइटी जो पाण खे लागो लगे ना हाँ रियली
पकड़े ऐसा concentrate नहीं करना चाहिए. You know, when he says something like this, we don't justify men's behavior. He can't handle it. It's after all their wife. True. It doesn't make sense. If so, does it mean that a woman has to constantly keep on justifying a man's action, no matter how it may be affecting her life, her children's life, her family life? અને તું હર લાઈફ જે જડે તું કરી હતી ને તો જે બેકગ્રાઉન્ડ જે અંદર સેલ્ફિશપણું જીજુ અચી વિયો બાઈએ જે ખાતર અને એ જ વસ્તુ આજ બાઈઓ કે અને સોસાયટી खे हैरान કરી રહી आहे. मुंहिंजो कूड़ो असांजो कूड़ो बाइयों जो कूड़ो ही सेल्फिश वृत्ति फैमिली लाइफ जी हैप्पीनेस खे रिड्यूस करी छॾी आहे अने स्त्री जे अंदर ई चीज न हुअणी खपे. She has to sacrifice more. Okay, but I don't know about sacrificing this, but I know that boy, Mars and Buzz, uncle, you know, they're equal in that one eye is the other. Okay, and No, he one eye other जी ॻाल्हि आहे न ॿ वाइफ्स जे माथे आहे. No. मर्द ने औरत ॿ जो हक़ सरखो स्त्री पुरुष ॿ जो हक़ सरखो आहे पर ॿ इक्वल न आहे. इन जो कम ॿियो आहे स्त्री जो पुरुष जो कम ॿियो आहे पर जो स्त्री पुरुष जे ठिकाने अची अने पुरुष जहिड़ी थियण जी ट्राई करे ही चीज सारी न. I agree with you, Pedro, the role too, that in the status they're equal. Okay, but unjo come to the, but that does not make one inferior to the other. न आउं इंफीरियर जी ॻाल्हि नथो करां. इंफीरियर जी ॻाल्हि नथो करां पर जो क़ुरान विच में खणी अचां तो तूं जरा नाराज़ थींदी आहे. क़ुरान जे अंदर ही लिखियलु आहे कि हिकिड़े मर्द जी जिदा विटनेस हुए तो विमेन इज इक्वल हाफ. એટલે ॿ बाइयूं खपनि हिकिड़ी विटनेस करण માટે मर्द हिकिड़ो सफिशियंट आहे. जो क़ुरान जा खणी अचूं तो अॼु ही ॻाल्हि थी अची પણ ॻाल्हि कूड़ो आहे. असीं इस्माइली मज़हब जे अंदरि बाइयूं जो स्टेटस बहु वधारे आहियूं. दरेक इस्लाम अने ॿिए ठिकाने पण इस्माइली मज़हब में बाइयूं जो स्टेटस बहु वॾो आहे. पंहिंजे मज़हब जे अंदरि इवन ए पीर ठही वई हिकिड़ी बाई हसन अली शाह मां बाप जी मां वटि पीरी जोमो हुओ. अलबत्ता बाई इमाम न थी सके के इमाम बाई न थी सके पर पीर जे दर्जे सुधी पंहिंजी जमात जे अंदरि बाई पहुची आहे. दुनिया जे अंदरि कोई पण जॻह अहिड़ो दर्जो न आहे सिवा के क्रिश्चियन लोग मरियम खे अहिड़ो दर्जो ॾेई ॾीन पर पंहिंजी नात जमात जे अंदरि अहिड़ी घणी जॻह आहिनि कि जितां मुखी कोई न पर मुखियानी आहे. ते बाइयों जो स्टेटस असीं रखिया आहियूं पर मुंहिंजो मतिलबु चवण जो कि ॿिए मिशनरीअ जो जमात में चवण जो ई आहे कि बाइयों जे अंदरि जे सेक्रीफाइस जी ॻाल्हि हुई कि भई धर्म जी ख़ातिर बच्चे जी ख़ातिर ई लोग भोग ॾीन दुख उपाड़ी छॾनि ही चीज निकिरी ने सेल्फिशपणो अची वियो अने ई ॻाल्हि बराबरि न आहे. बिला शक बराबर. When I'm referring to women's ambitions, I'm referring to intellectual kind of ambitions. हाणे तू क्लेरिफाई कई आई उन वक़्तु कई होत तो ये मड़े जी चवण जी ज़रूरत न. बाइयों के बराबर इल्म सिखियो खपे साइंस में अॻियां वधियो खपे गुड प्रोफेशन्स में वञो इल्म सिखो बंदगी करो अॻियां वधियो. नथिंग रॉन्ग अवर रिलीजन अलाउज इट. पर आई वॉज टॉकिंग अबाउट फैमिली लाइफ. तू कॉलेज में वञे अने तुझे बच्चे जी फ्यूचर खराब थी न हुए तो आम तो के चवंदुसि बेटा कॉलेज छॾी दे. जो तू हेवर जे टॉक करी रही है इनमें ही थिए तो के बच्चे के छॾी ॾियो पण कॉलेज में वञो. एग्जैक्टली ये ॻाल्हि बराबर. I'm on the way. I'm trying to find a way which will say how we can integrate our modern society and still be Ismaili. गुजराती सिख અને સુલતાન મોહમ્મદ શાહ જા ફરમાન વાંચ કલામે ઇમામે મુબીન
750 पेजिस आहिनि ऐं तोखे बेटा चा मड़े खे चवां थो ऐं घणी वक़्तु वाइज़ में चयो आहियां कि इस्माइली मज़हब जो एनसाइक्लोपीडिया ई 2 चोपड़ियूं आहिनि 2 वॉल्यूम्स इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह जे फरमान आहिनि कलाम इमाम मुबीन वेरी इम्पोर्टेंट चोरी न कर पण कोई पण कीमते मिले तो गिन Okay, can we have the last 2 questions now? Okay, so let me finish this. But again, I will reiterate this one request. Can have us in the boy they will take I concentrate women must but at the same time I try example dina ke panjipurane ke one man to witness so it's equal to 2 women's witness. Okay, but I believe my understanding would be that if a man is what he is supposed to be, no one else yet has said what a man is supposed to be. I didn't karo ke marsa look at he karo chala but this is your role, this is what you're supposed to be. तो मुझे वाइज़ सुने इन जे अंदर तू सुन रही है ऐं हमेशह कुरान हदीस में गिनान अने पर्टिकुलरली गिनान मथे ऐं जीचो बोला तो सारा थियो कोई जो हक़ न खायो ज़ुल्म न करो टॉलरेंट थियो काइंड थियो हमेशह मुझी थीम इज रही कि पंहिंजो कैरेक्टर सारो हुअणो खपे एंड वी मस्ट even if it is possible that we must suffer for the sake of others' good, this suffering is also a virtue. We have a question right at the back. I think we need a lot of reading to do, a lot of maturity, and emphasize these things in your life, and I think it reflects very clearly in a great meaning. But I'll just give one of the examples. Maybe you can educate us in that respect as well. So my various I've seen, there's a demand on the occasion that they have put their religion, some put Al-Afghani, some put Ismaili, some put Fajar. There's hardly one, and I'm the only one who put Islam as a religion. And I wonder why. Is Ismailism a separate downstream altogether from all other religions in the world? And this was highlighted even recently when I was reading an article in Dawn of Karachi. There was on the Canadian aid and whatnot. And they said 3 major schools of thought in Islam: Shia, Sunni, and Ismaili. And I wonder where does Ismaili come from? I always thought this was part of Shia. So, these are things which I think are very predominant in our minds, that we look after as Ismaili first. Although I think that we are first Muslims and first followers of Islam. If I found Fatima is the greatest representative of Islam, so why don't we look after as that? And I think we really need a complete rehaul or renovation of our religious education society. It is absolutely true, and you are correct in saying we should always say that we are Muslims. But wherever any such criteria or situation arise that we have to give our identity, then of course we can say that we are Ismaili Muslims. But definitely we are Muslims first, because if we are not Muslims, then we are not Ismailis. We must do that. But unfortunately, present situation in Western society about Islam is very doubtful and critical. In Western media and in Western society, Islam has been looked upon as a militant force. Therefore, we want to tell people we are Muslims, but not like these Muslims who are fighting for the sake of material gains. Say the Islam in Western media of Iran, or Islam of Iraq, or Islam of Saudi Arabia. Very multi-millionaire Arab sheikh. He went to
Las Vegas 4 years ago, and at that time I was there too. Next day in the paper it appeared that he lost $1.5 million in one night in gambling. An Arab sheikh so his name was also there. He lost $1.5 million in one night. Now we don't want to just stand Muslims of this kind in the eyes of public, and that is why we say that we Ismailis are Muslims, but different Muslims than these people. Or say, once I was in Chicago in '82. In Chicago, there was a report, a coverage on television. A 22 years or 24 years old young man from Iran. He was being interviewed. So there was a question, what is Islam? He brought his eyeballs out, kept his fist. Islam means revenge. Now is that Islam? Islam means revenge. These Western people, they laugh at us. And Western media is not Islam's friend. Western media is enemy of Islam. But they are depicting Islam in such a way. Therefore, we want to just be away from such a situation. But we are certainly Muslims. And we must always say, we are Muslims, but Ismaili Muslims. Last question. Very good, shabash. मुझे लगे तो कि तू मेजर माँ है ना गई काले अपनी छोकरी तस्वीर कढण આવી અને ઈ જો લિબાસ નારી ડ્રેસ નારી મુકે સારો ન લગો એ લગ્નો કે જેને પિકનિક પહેરી નથી ટ્રાઉઝર પહેરી અને ઈ જો બ્લાઉઝ ટ્રાઉઝર જે અંદર અને હેડી રીતે બિલકુલ ઠીક ના જે લોકો વારા ઢીંતા એની કે ही समझो खपे के ज्ञान घटपाट फरमान तस्वीर दुआ वगैरह में जिन जो ड्रेस सारो ना इनके वारो न ढीणो खपे अने जमात खाने जे अंदर सर्टनली पांखे वेल ड्रेस जो मुझे मतलब कि जे ड्रेस इज्जत वारो हुए अगर ठिकाने हूँ वियो से नांदी थी नहीं हुई नांदी नारा तो मुझे नजर पई जमात जी कामड़ियानी एड़ो लिबास पहरीने ड्रेस पहरीने वेठी हुई मुखे पसीनो अची वियो इन जो गळो जे हो एटलो वडो वधो अने हेडा खाली स्ट्रिप जेडी रीते नाइटी जो हुए तो आऊं ही चा के नाइटी पहरीने आवी हुई आऊं पहला तो चुप रह्यो से मुख से रवाणु ना आऊं बायों जे अंदर विनी आ जो कमड़ियानी मां ही जे लिबास है ही बेडरूम जो लिबास है अने तू हिना कमड़ियानी जे तखत मथे वहीने एड़ी रीते बायों सुन रही हुई इनके पसीनो अची वियो मुंह नीचे थी वियो एटलो चईने हूँ हलियो आयो से पोइ ही लोको इनके हस्बैंड जे साथे मुझे घरे आया दारूसलाम जी गाल है अने माफी मंगियो अच्छा अड़ी रीते न होनो खपे जमात खाने जे अंदर सारो बिहेवियर रखियो खपे घणी वक्त मर्द लोग अची वञनि था पांखे अहिड़ो लिबास हुअणो खपे कि जिन जे अंदर पंहिंजी मर्यादा रहे शर्म रहे अने आउं ख़ासि पर्टिकुलरली डिपिक्ट करण नथो वञा पर मौलाना हाज़िर इमाम जो फरमान पर्सनल फरमान उभो रहीने मौला कराची जे जमात खाने में हिन संबंधी फरमाने कया आहिनि अने मौलाना हाज़िर इमाम हिकिड़ो तालीको पण हलाया ड्रेस जी संबंधी के इस्लामिक वे प्रमाणे इस्लामिक भावना प्रमाणे आबरूदार कपड़ा पहरो अड़ा कपड़ा न पहरो कि जिनसे शर्म हया मटी वने अने रसूलुल्लाह फरमायूं कि अगर बायूं जा खराब लिबास हुन अने मर्द जी नजर बद थिए तो ई मर्द जो गुनो नहीं चवाय पण औरत जो गुनो चवांदो पर्टिकुलरली जमात खाने जे अंदर जे दुआ घटपाट थार सुपरो के ड्यूटी मथे के तस्वीर मथे हुन
इन जा कपड़ा काड़ा पन न होना खपन, कारण कि काड़ा कपड़ा पंहिंजे मज़हब जे अंदर मनाई है, बिल्कुल मनाई है। काड़ा कपड़ा न होना खपन अने मर्यादा वाला कपड़ा होना खपन। ट्राउजर પહેરીને અચનો જમાત ખાને જે અંદર ભાઈઓ જે માટે આ મનાઈ નથો કરા, પણ સામે બ્લાઉઝ એટલો લંબો હોય કે ફ્રન્ટ પોર્શન ઢકાઈ વિને એવડો લંબો હોનો ખપે, એવી રીતે ના હોનો ખપે। તું કરો તું તો કરે તું કરે હા બોલ અને ચલો ક્વેશ્ચન બોલ બોલ I muke gaykaale પણ disagreement દેવી I muke તો સુતર ફરમાન કર્યા કે આને વેસ્ટર્ન ક્લોથ્સ પહેરો everything but પાંચ એસોસિએશન જા વડા હા એડા કયો છે ના બેટા એસોસિએશન અને કાઉન્સિલ બે કે નામ દઈને આ હેવર કયો છે કે હી ક્વેશ્ચન્સ મૂકે ન ખપે તું હી જઈ શકે પાંજા વડીલો આ મુકે કયા કે તે કપડા આમ નિકાલે પહેરો સારા ના તું હેવર પહેરી અહીં જ I finished? Hello? I think we're now reaching the end of this morning's program. However, before we conclude, I would like to propose a word of thanks for Alwaez Rai Bhai, who very kindly gave us his time and energy to come and provide this morning's very illuminating discussion. To Mr. Mehboob Kamaria, who has been driving Alwaez around. To Captain Ma, who came early this morning and prepared the wonderful tea for us. To Mukhi Sahib, Kamre Sahib and President Sahib, who made this function possible. And finally, last but not the least, to Missionary Ma, who has been accompanying the Alwaez on this arduous trip. Thank you. मेरे आई 3 दिन से मुझे वाइजों ने लेक्चर सुनिया, जो शुक्रगुजार आया सुखी आबाद रहो, बोला दीन में दुनिया में आज चढ़ती करे, जो ईमान मजबूत करे, आज मथे राजी थी नेक उम्मीदों पूरी करे, मौला दसून सुकरेत में पूरा रखे, फरमान बरदार बनाए।